Okay, now the recording is started. A very good afternoon to all the students. So in the morning lecture, we discuss about various types of codes, gray code, access3 code, and then we discussed about fixed point representation and complement arithmetic, complement of signed numbers. That is what we have discussed. Now, can you see the slides? This is slide representation. Students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, after discussing fixed point representation, that we discussed that most significant bit is dedicatedly assigned for representing sign, whether the number is positive or negative. हेलो सर Yes. सर वो क्या आपने बताया कि सिर्फ बाइनरी का एक्सेस 3 कोड आपने लिया है, लेकिन डेसिमल का हम लोग कर सकते हैं क्या? आपने सिर्फ बाइनरी डिजिट का ही मतलब बाइनरी नंबर का ही आपने एक्सेस 3 कोड किया, तो हाँ। डेसिमल नंबर का हम लोग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हमने बाइनरी का एक्सेस 3 इसलिए हमने डिस्कस किया क्योंकि ये जो हम कंप्यूटर का स्टडी करने वाले हैं तो कंप्यूटर बाइनरी के ऊपर चलता है, तो इसलिए हमने बाइनरी का एक्सेस 3 कोड हमें मतलब कोडवर्ड की सर जरूरत डेसिमल क्यों कर सकते हैं? हमें कोडवर्ड की जरूरत क्यों पड़ेगी? राइट, कोई सिंबल है उसको बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके अलग अलग कोडवर्ड्स है, राइट। तो ये डेसिमल में लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट ये हमारे सब्जेक्ट के रिलेवेंट नहीं है। ओके, इज इट ओके? यस सर। तो नाउ वी सी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। नंबर का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? So in the case of floating point representation, a standard IEEE format is the most significant bit is used to represent sign magnitude of a number. Then second most significant bit is used to represent sign of exponent. And then exponent is written in binary. And finally, bits are allocated for mantissa. So again, floating point representation is first most significant bit is for sign magnitude of a number. Second most significant bit is sign magnitude of exponent. Then we have exponent number. Then we have mantissa number. Let us see one example. Suppose 11.8 in decimal. The same number in binary can be written something like this: 1011.11001. This same can also be represented by shifting a decimal point to the left side to 3 decimal places. Sorry, in this case it is not decimal places, it is binary places. So shifting the decimal point on the left side to 3 binary places. When we are shifting to the left, what we have to do? We are shifting 3 times, so we have to multiply with 2 raised to 3 because here radix is 2. यदि डेसिमल होता तो हम 10 raised to 3 करते, लेकिन ये बाइनरी है तो 2 raised to 3 किया है। Now number 3 can be represented in binary like this 011. So this number 11.8 in a floating point representation, how it can be written? Here we have mantissa and here we have exponent. Now both are positive in this case. So how we write the number? The first most significant bit 0 represent that the number is positive. So here the number is positive.
So that is 0. Second bit is to represent the exponent. Exponent is positive or negative. In this case, exponent is positive. So here bit 0 is used. Then exponent is shown. Exponent is 0, 1, 1. So that exponent 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. And finally, mantissa is shown. Mantissa in this case is 0.0111. That is, we are not showing point, only the right to the point, that is 0111. So this is how a floating point number can be represented in binary. And this is signed representation. Yes. ओके अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसमें जो सबसे पहला बिट रहेगा दैट विल रिप्रेजेंट कि ये नंबर का साइन क्या है. 0 है मतलब के नंबर पॉजिटिव. फिर ये जो एक्सपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है. यदि +3 की जगह पर -3 होता तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ता. तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए 0. उसके बाद एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट के बिट्स दिखा दिए और फाइनली इतना जो है वो मैंटिसा है, तो मैंटिसा दिखा. तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. Let us see one more example. The number is 13.9 minus 13.9 in decimal. How it can be written in binary? After doing binary conversion, the number is something like this: minus 1101.11100. This goes on. We have already seen how to convert decimal number to binary. Digits which are to left hand side to the decimal point, we have to divide by 2 till we get a quotient 0, and reminders we use to create a binary number. And for the digits which are on the right side of the decimal point, we are multiplying with 2, right? Successive multiplication. And the integer portion we are using, and fraction portion we are again multiplying with 2. So that number is something like this. Now this number, decimal point, if we shift to 3 places, this is in binary domain, then it will be minus 1.10111100 multiplied by 2 raised to 3. Because we are shifting to the left hand side, that is why we are taking +3. If we were shifting to the right hand side, we would have written -3. Yes. And so number 3 can be written something like this. This is in the binary domain. And now to represent is floating point representation. Now because the number itself is negative, so here the most significant bit is 1. Next is, what is the sign of exponent? Exponent sign, this is +3, right? So sign of exponent is positive, and so we are writing this 0. Now what is exponent? 0, 1, 1. So exponent is written. What is mantissa? 1011. So mantissa is written 101. This is how a floating point number can be represented. Signed floating number representation. You see, what is the advantage of this floating point representation? Over here, we are in this format, we are using 3 bits to represent exponent. With 3 bits, what is the maximum number we can represent? 7. And 4 bits we are using to represent mantissa, right?
So how many total numbers we can show? One point, the minimum possible value, let us say it can go for minus 1111 4 times, and its exponent will be, in the minus case, minus or plus, it can be 1 1. Now this is in the binary, okay? We need to then convert it to decimal. So the advantage of floating point number is that now we can show more range with same number of bit. यहाँ पर भी 8 बिट्स का ही, सॉरी यहाँ पर 9 बिट्स का यूज किया है, लेकिन 9 बिट का यूज करके हम ज्यादा पॉसिबल नंबर्स दिखा सकते हैं. We can show more numbers with fewer bits. यदि हमने इसकी जगह पर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रखा होता तो 9 में से 1 बिट तो यूज हो जाता साइन के लिए, और बाकी के 8 बिट से आप मैक्सिमम कितना दिखा सकते हैं, -255 से लेकर +255 तक. उसकी जगह पर यहां पर तो काफी सारे अलग अलग नंबर हम दिखा सकते हैं. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now let us start a new topic, which is related to register transfer and micro operations. Now you see register transfer. Registers are used to store binary digits, right? So digital systems, they are composed of the modules that are constructed from digital components such as registers, decoders, arithmetic elements, and control logic. Now the modules, they are interconnected with a common data and control path to form a digital computer system. Last to last lecture में हमने एक बेसिक आर्किटेक्चर देखा था, और लैब में भी हमने पढ़ा था 8085 का आर्किटेक्चर. So in that we found out that there are multiple registers, there are multiple arithmetic elements, multiple decoders, but all of those, they are connected to some common bus. सर There are some common data or control path. Yes. सर प्रीवियस में हमने सर देखा था सर 80 जो था 80 उसमें सर हमने देखा था कि सर उसमें मल्टी रजिस्टर यूज होता है, लेकिन सर वो कौन सा पर्पस है सर, जनरल पर्पस के लिए या स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता था? मल्टी रजिस्टर, वो जो मल्टीप्लेक्स रजिस्टर हमने 8085 में पढ़े थे, दे वर जनरल पर्पस रजिस्टर्स. ओके. और सर ये जो फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा. यस. और सर ये रजिस्टर जो है माइक्रो ऑपरेशन के लिए जो रजिस्टर यूज होता है सर, वही रजिस्टर है या स्पेशल पर्पस के लिए रजिस्टर यूज होता है? नो, माइक्रो ऑपरेशंस के लिए जो हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑपरेशंस के अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं. माइक्रो ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है? ऑपरेशन करना है, इंस्ट्रक्शन करना है. So the instruction can be for general purpose register also, and instruction can be written for special purpose register also. ओके सर. For example, जो स्टैक पॉइंटर है या प्रोग्राम काउंटर है, वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, उसका एक स्पेशल टास्क है, राइट? प्रोग्राम काउंटर का टास्क क्या है? वो एड्रेस का वैल्यू स्टोर करना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट?
So the meaning is that there are many modules, registers, decoders, arithmetic elements, control logic. These all are interconnected with, remember, there is common data and control path. बहुत सारे मॉड्यूल है लेकिन वो सब कॉमन बस के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है. And the operations, they are executed on the data that is stored in the registers, whether it is general purpose register or special purpose register. The operations that are executed on the data stored in the register, these operations are called as micro operations. ये रजिस्टर में जो स्टोर किया हुआ डेटा है उसके ऊपर हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसको हम माइक्रो ऑपरेशंस बोलेंगे. A micro operation is an elementary operation performed on the information stored in one or more registers. Now, for example, what are the possible micro operations? Shift data, count data, clear register, load some value. These all different micro operations are related with registers. Now let us see one example. Let us consider there is a register R, which is an 8-bit register. So here it is showing that there are individual bits which can be stored into that register, bit 0 to bit 7. So inside that register there will be 8 flip-flops, and each flip-flop will be storing 1 bit, and such 8 flip-flops can store 8 bits. Now depending on their connections, there will be least significant bit and most significant bit. Now these all 8 bits, all 8 flip-flop, they are used to store data of 1 byte. Similarly, there can be a register, let us say R2 register, which is of 16-bit. So the same register can be used to store 2 bytes of data, 16 bits, or it can be divided and it can store 8 bits separately, 8 bits into upper half and 8 bits into lower half. The bit 0 to 7 of 16 byte is stored in, let us say, register L, and bit 8 to bit 15 that is stored in register H. So this is how a register can also be used. Now the operations we discuss, here we designate the information transfer from one register to another register. Like content from register R1 we want to move to register R2. If the transfer is to occur only under predetermined conditions, then we may designate instructions like if some function capital P is equals to 1, then perform the transfer. Right? We can write some such logic also. There can be normal transfer also, and there can be conditional transfer also of the data from one register to other register. Now it is important for us to understand this transfer is occurring in synchronization with the clock. So consider over here register R1 is there, register R2 is there. Both registers are able to store n bits of data, and there is some control circuit which has a function P, and register also takes clocks as an input. And the conditional instruction that we wrote, that if P is equals to 1, then we have to perform a transfer. Here, if the register receives a control signal that P is equals to 1, then there has to be a transfer from R1 to R2. But transfer will not happen randomly, right? That has to be happen in synchronization with the clock. In the previous to previous lecture, we discussed about this concept, right? The triggering concept. Here, the circuit diagram shows that the triggering is rising edge triggering. That means the circuit will take its decision only when there is a rising edge on the clock signal.
जब क्लॉक सिग्नल में राइजिंग एज आएगा तभी सर्किट कोई डिसीजन ले सकेगा, वरना डिसीजन नहीं लेगा। सो ये यहां पर एक एग्जांपल दिया है that here the function p is equals to 1 and depending on that control circuit is sending a signal. That signal is load signal. Load the value from register R1 to register R2. Now understand it very carefully. So how the load signal is during this time duration, load signal is 0. Then it is changing from 0 to 1. And then during this much time interval, load signal is 1. And then it is again becoming 0. Okay? So now you observe, when there is a rising edge, first over here, at that time load signal is 0. So as per logic, there will not be any transfer from R1 to R2, right? Now, during this time interval, from this rising edge to next rising edge, during that time interval, even if load signal is 1, between this time interval, even if load signal is 1 for some time, then also it will not perform any transfer, because the decision will be taken only when there is a rising edge. Okay, so for next rising edge that is received at this time interval, at this time instant, the load signal is, observe, the load signal is not 1. It is trying to change its state, but it has not received the value 1. So the load signal is not 1. That means data will not transfer from register R1 to R2 at this time interval also, at this time instant also. So again, it has to wait till next rising edge occurs. On the next rising edge, load signal is 1. So register will take a decision that there is a triggering and the load signal is also available. So there has to be a transfer of data from register R1 to register R2. The transfer will occur at this time instant, not at this time instant. Is that clear? So this is how register transfer occurs in synchronization with the clock. Students, is that clear? Yes, sir. Good, Milan. So what are the basic symbols related to register transfer? First thing is the symbols, that letters or numerals which denotes a register. For example, R2 or R1 or register A or register B, right? That can be written like this. Or there is a MAR register. Then the parenthesis. Parenthesis denotes the part of the register. For example, one register is able to store 16 bit. So if we want to represent part of the register, the lower byte, we can write it like this: R2 of 0 to 7, or we can write it like R2 of L. So parentheses are used to represent part of the register. Then what do we mean by arrow? Arrow indicates that there is a transfer operation of information. So arrow is shown like this. That means data is transferred from register R1 to register R2. Whenever there is a comma is used to separate two different micro operations. So here one micro operation denotes R1 to R2 transfer, and second micro operation represents R2 to R1 data transfer. So these notations, these symbols are going to be used in further slides. We'll see, for example, over here, depending on the condition,
whether P is equals to 0 or 1. If P is equals to 0, then this micro operation will happen. Load register A with the content of register B. And if P is equals to 1, then this micro operation will occur. Load register B with content of register A. So for that, we can use this kind of logic. X and T, there are two inputs. X and T, there are two inputs. If both inputs are 1, then output of the logic gate will be 1. If output of the logic gate will be 1, this will receive, register B will receive a signal 1 and register A will receive a signal 0. So in that case, register is not receiving the signal to load the data, but register B is receiving. So B will load the data from register A. If X or T, any of that is 0, so output of AND gate will be 0. Output AND gate 0, 0 reaches to signal register B. Register B, it will not perform transfer, but there is a NOT gate in between. So register A will receive 1. It will perform transfer, take the data from register B. So such logic can be written. Then let us see one analogy for some digital circuits, multiplexer. Already you have learned this circuits in the course of digital electronics, right? Mux circuit. So you see, this mux is a 4-to-1 mux multiplexer. This is the analogy, right? There are 4 inputs. D0 represents the MP3 player, docking system. D1 represents laptop sound card. D2 represents digital satellite. D3 represents digital cable TV. And then there is only one output, which is connected to surround sound system. We have such connection at our homes. Many times one surround sound system we connect with our TV also, our radio also, right? Or a DVD player, right? Like that. So this is such mux connection. And then there are 2 select lines A and B. Now the logic is written in such a manner that if select lines are 0, 0, then content of the D0 will transfer to output. That means output surround sound system is connected to MP3 player. If select lines are 0, 1, then the laptop is connected to surround sound system. Similarly for satellite and cable TV. So at a time, by selecting appropriate select lines, we can transfer data from any one of the input to output. All inputs data simultaneously cannot be transferred into output. Only one of the input will be transferred to output. You can also consider this with the analogy of traffic cross section, right? A traffic police allows certain traffic to block and only certain traffic is allowed for certain amount of time. Like that also. But over here, there is only one output. Similarly, demultiplexer. Here in this case, there is one input and 4 possible outputs. Input is, let us say, our computer. Output can be our laser printer or a fax machine or inkjet color printer or a pen plotter. Now, depending on the control signal, input, which is the output of computer, that will be assigned to any one of these 4 possible outputs. So if select lines are 0, 0, then laser printer is connected with computer. And computers, whatever signal computer is sending, that is received to laser printer. If the select lines are 0, 1, then signal sent by computer will be received to line D1, that is connected to fax machine. And such we can use multiple resources with one computer.
So this is the task of demultiplexer. Similar thing is possible for our digital circuit which is present on the IC also. There can be multiple blocks, there can be multiple components, and one component's output can be connected to multiple components input via demultiplexer. Or multiple components output can be connected to one component input via multiplexer. That is about multiplexer and demultiplexer. Now let us see something about called as decoder. So this is the decoder IC and this is its truth table. There are 2 inputs and there are 4 outputs. And there is one enable pin. If you see enable is not active, then whatever is the input, output will always be 0. If enable is active, then only certain decision will be taken. Now what decision will be taken? Here input is a 2-bit data. So this 2-bit combination is mapped to only one of the output. And so depending on what is the input value, one of the output signal will be 1, otherwise others will be 0. So you see, when A and B both are 0, 0, the Y0 output, over here Y0 is written, over here D0 is written, consider D0 as Y0. So Y0 is equals to 1 and rest 3, Y1, Y2, Y3, they are 0. Similarly, if input is 0, 1, then Y1 is 1, others are 0. If input is 1, 0, then Y2 is 1, others are 0. If input is 1, 1, then Y3 is 1, others are 0. So only one of the output is active at a time depending on the input signal received. But over here there are multiple outputs. Right? Similarly, this is a 3 to 8 decoder. So there are 3 inputs A, B, C, and there are 8 outputs. If there is an enable signal and at that time, if input is 0, 0, 0, then Y0 is 1, rest are 0. If input is 0, 0, 1, then Y1 is 1, rest are 0. If input is 1, 0, 0, then Y2 is 1, rest are 0. Sorry, 0, 1, 1. If input is 1, 0, 0, then Y4 is 1. Like that, for different input combinations, only one of the output is active at a time. So this is the use of decoder. Now using this decoder, what we can do, if there are multiple components which are connected at the output of the decoder and which are simultaneously working, but only one of that has to be active at a time. So what we can do, we can give appropriate input which will result in only one of these output to be active, and only that component which is connected with that line will be active, rest will be inactive. ये सारे आउटपुट पिन के साथ कोई ना कोई डिजिटल ब्लॉक हमने कनेक्ट किया हो और हर एक ब्लॉक पैरेलल में काम करने लायक होंगे, तो लेकिन उसको साइमल्टेनियसली काम नहीं करने देना है. ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन करना है कि जो वो पर्टिकुलर चारों ब्लॉक में से कोई एक ही ब्लॉक एक टाइम पे काम करे. एट दैट टाइम और हियर हम जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से कोई एक आउटपुट इनेबल होगा, तो वो 4 में से किसी एक ब्लॉक को ही इनेबल करेगा. एक एग्जांपल देता हूं. सपोज एक D0 के साथ कनेक्टेड है एडर सर्किट, D1 के साथ है सब्ट्रैक्टर सर्किट, D3 के साथ है शिफ्ट ट्रांसफर सर्किट, और D2 के साथ शिफ्ट ट्रांसफर और D3 के साथ मल्टीप्लिकेशन. So now what happens? If you give the input 0, 0, then adder circuit will be active, others will be deactive. Input will be 0, 1, then subtractor will be active. Like that, different operations, different circuits can be enabled at a time by the using decoder IC.
Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now let us quickly revise half adder circuit and full adder circuit. Half adder, there are two inputs, and output, there are two outputs. One output is sum and second output is carry. 0 plus 0, sum is 0, carry 0. 0 plus 1, sum 1, carry 0. 1 plus 0, sum 1, carry 0. 1 plus 1, sum 0, carry 1. So if we see this truth table for sum is equals to 1 when there is A and B both are unequal. So that is XOR operation. So sum we can implement using XOR gate. A and B are the inputs to the XOR gate. If both are unequal, then output sum will be 1. Where C is equals to 1? C is equals to 1 when A and B both are 1. So that we can realize using AND gate. A and B both are inputs to the AND gate. If both inputs are 1, then and then only output carry will be 1. Otherwise, output carry will be 0. Similarly, there is a full adder circuit. Right? There are three inputs A, B, C, N. And there are two outputs, sum output and carry out. How this works? If all three are 0, sum 0, carry 0. If A is 0, B is 0, carry is 1, then sum is 1, carry is 0. 0, 1, 0, sum 1, carry 0. 0, 1, 1, sum 0, carry 1. 1, 0, 0, sum 1, carry 1. There are 2 times 1 over here. So 1 plus 0. So that is sum 0, carry 1. 3 times 1, 1 plus 1, 3. That is 1, 1. So sum 1, carry 1. So this is quick presentation of half adder circuit and full adder circuit. Yes. Sir. Yes. What is the difference between full adder and half adder? Yes. Half adder circuit can perform addition of two binary digits, only 2 bits. On the other hand, full adder can perform addition of 3 bits. And so when we want to add, suppose 2 bytes, suppose one byte is 10, 10, 10, 10, and second byte is 11, 00, 11, 00. If we want to perform addition of 2 bytes at that time, half adder will not be much useful, but full adder will be useful. How? Because for least significant bit, there is addition of only 2 bits. But for remaining bits, there has to be addition of 3 bits. Because whatever is the carry that can generate after addition of LSB, that will be used to perform addition for the next sequence bit. Right? Let me put over here 1. This is 1 and this is 1. Now LSB is just addition of 2 bits. So 0, 1 plus 1. What is the answer? 0, carry 1. Now to implement this addition of 2 bits plus a carry bit. Carry which is output of previous operation, previous bit addition. That has to be used for addition of From 0 to 0. Over here we need full adder. Clear? Yes, sir. Every time there has to be addition of 1 bit from 1 byte, second bit from another byte, and the carry, that is carry in, and that will produce sum and carry out. Carry out can be used for next full adder. Is that clear? Yes, sir, clear. Now there is a concept called as a tri-state, which is also very important, and we need to learn that concept.
So far what we know, only two states, binary 0 and binary 1. Yes or no? Yes, sir. Now in the microprocessor circuit, there is one more state which is present as a at the input of a circuit, that is called as a tri-state, or it is also called as a high impedance state. Consider there is a tri-state buffer. Now for example, we are considering one buffer. Now what is a buffer circuit? Buffer circuit has a symbol like this. A is equal, input is A and output is B, and B is equals to A. So buffer circuits are those circuits whose output is same as input. These components are just used to provide additional delay into the circuit. So such we have tri-state buffer. In that case, the buffer is having three states. So the circuit has two input and one output in the tri-state buffer. The first input behaves like normal input for the circuit, and the second input is enable. Now if enable is set high, then output follows proper circuit behavior. But if it is set to low, then output looks like wire connected to nothing. Let me show you this by circuit connection. See, this is a tri-state buffer symbol. There is one input, there is one output, and there is one enable. Enable is also input. If enable is high, then output is same as input. But if enable is low, that means output will be in high impedance state. High impedance meaning almost open circuit. That means it looks like output wire is connected to nothing. Right? So it is neither 0 nor 1. There is no current transfer from the output. So yeah, if enable is present, then output is same as input. But if enable is low, then in that case output is open circuit. Now when enable is given, at that time output is same as input. In that case, input can be either 0 or 1. So output can be either logic 0 or logic 1. But when enable is not given, enable is low, at that time output is neither 0 nor 1. Wire connected to nothing. Output is open circuit. हेलो सर Yes. सर इनेबल में ये करंट जाता है या वोल्टेज जाता है? वोल्टेज से कंट्रोल होगा, ये डिपेंड करेगा। आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट पढ़े होगा, एक बीजेटी भी पढ़ा होगा, एक एफईटी भी पढ़ा होगा, राइट? तो उसके अंदर तो ट्रांजिस्टर ही है। जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यदि आपका डिवाइस करंट से कंट्रोल होता है तो एनेबल सिग्नल आपको करंट देना पड़ेगा। यदि आपका डिवाइस वोल्टेज से एनेबल होता है, मतलब एफईटीज है, तो आपको एक्टिव करने के लिए सिग्नल वोल्टेज देना पड़ेगा। क्लियर? हेलो सर। यस। सर अगर ये वोल्टेज कंट्रोल में होता तो इनेबल को अगर ग्राउंड कर देते तो फिर क्या होता? यदि आप एनेबल को ग्राउंड कर दिया और वोल्टेज कंट्रोल है, मतलब कि आप एनेबल लॉजिक लो सिग्नल दे रहे हो, राइट? इन दैट केस आउटपुट looks like wire connected to nothing.
तो ये जब ट्राई स्टेट वाले बफर होते हैं उसमें आउटपुट का 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। आउटपुट का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है जब एनेबल दिया हो और इनपुट की वैल्यू 0 या 1 हो। यदि एनेबल नहीं दिया है तो उस केस में आउटपुट है वो हाई इंपीडेंस स्टेट में जाता है, मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट ओपन सर्किट। इट लुक्स लाइक वायर इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। इज दैट क्लियर? सर तो अगर ये वोल्टेज कंट्रोल सर्किट है तो इनेबल को अगर 0 कर ही दिए तो ओपन सर्किट हो गया था, सर फिर वोल्टेज कंट्रोल का मतलब क्या रहा, फिर उसका वर्क क्या हो जाएगा वहां पे? गुड क्वेश्चन। सी, कई बार यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है माइक्रो प्रोसेसर में, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स, सॉरी, ये एक बफर तो नहीं है ना। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे बफर है, नॉट गेट है, अलग अलग गेट्स है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स एक उसके आउटपुट दूसरे बहुत सारे कंपोनेंट्स के इनपुट के साथ कनेक्टेड होंगे, राइट? आर यू विथ मी ऑन दैट और नॉट? यस सर। So one component's output might be connected to multiple components input. Now at that time, in many operations, what might happen? अब ये जो दूसरे कंपोनेंट्स है उसके इनपुट है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक कंपोनेंट के ही आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो, वो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं ना। सर तो इनपुट से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे सर, फिर इनेबल से कंट्रोल हो रहा है ना, कि इनेबल अगर हाई हुआ चाहे लो हुआ तो उससे ये यस, एनेबल हम सर यहाँ पर दे रहे हैं, राइट? सर यदि एनेबल लो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ओपन सर्किट। और यदि एनेबल 1 है तो आउटपुट जो यहाँ पर इनपुट आ रहा है वैसे आउटपुट जाएगा। सर तो वो फिर लॉजिक है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। सर तो इनपुट कितना भी हो तो फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इनेबल से ही हो रहा है तो फिर। मैं आपको इनेबल का फायदा समझा रहा हूँ। सर लेट मी कंप्लीट। Okay, what I am showing a circuit where consider there is a block A, block B, block C, block D। अब ये जो ब्लॉक B है उसका आउटपुट ब्लॉक C के साथ भी कनेक्टेड है और ब्लॉक B जो है वो ब्लॉक D के साथ भी कनेक्टेड है और बहुत सारे ब्लॉक्स के साथ ये कनेक्टेड है। लेकिन ये जो ब्लॉक C है उसका इनपुट ब्लॉक ए के साथ भी कनेक्टेड है और ये ब्लॉक बी के साथ भी कनेक्टेड है, राइट? एंड ये ब्लॉक सी ऐसे ऑपरेट कर रहा है, आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो दैट इट टेक्स ओनली वन ऑफ द इनपुट एट अ टाइम। इट इज रिसीविंग इनपुट फ्रॉम आउटपुट ऑफ ब्लॉक ए एज वेल एज आउटपुट ऑफ ब्लॉक बी। ऐसे माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं कि मल्टीपल ब्लॉक्स दूसरे मल्टीपल ब्लॉक्स के साथ कनेक्टेड होंगे। एट दैट टाइम यहां पर ब्लॉक सी को इनपुट में सिर्फ ब्लॉक ए का आउटपुट ही देना है, तो हम क्या करेंगे? जो हम मतलब कंट्रोल यूनिट वो ब्लॉक बी को एनेबल सिग्नल नहीं देगा और ब्लॉक ए को एनेबल सिग्नल देगा। तो ब्लॉक ए में एनेबल में जो आउटपुट जाएगा वो ब्लॉक सी के इनपुट में जाएगा। ब्लॉक बी को एनेबल सिग्नल नहीं दिया है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन
कहां पर सिग्नल ट्रांसफर होगा वो हम ये ट्राई स्टेट का यूज करके हम बहुत सारे कंपोनेंट को डिसेबल कर सकते हैं। वो ब्लॉक उस वक्त आउटपुट में डिसेबल हो जाएगा, ना तो 0 देगा ना 1 देगा। इज इट क्लियर? Yes. सर यस। अगर सर इनपुट का जो भी इनपुट दे रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और बढ़ा दिया जाए तो इनेबल पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? यहां पर मैग्नीट्यूड हम सिर्फ दो ही स्टेट में काम करते हैं, ओनली 0 एंड ओनली 1, 0 एंड 1। तो दो ही पॉसिबल मैग्नीट्यूड रहेंगे, लॉजिक 0 लॉजिक 1। तो या तो डिसेबल या तो इनेबल। सर तो अगर सर इनपुट अगर 0 है और इनेबल 1 है तो आउटपुट भी 0 ही होगा। यदि इनपुट 0 है इनेबल 1 है तो आउटपुट 0 होगा। यस करेक्ट। और इनपुट 1 है और इनेबल 0 है तब भी 0 ही होगा आउटपुट। नहीं, यदि इनपुट 1 है और एनेबल 0 है तो आउटपुट आपका, एनेबल ओपन 0 है तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ना 0 ना 1, चाहे अच्छा इनपुट में जो कोई भी हो। तो 0 आउटपुट ही विल बी बोलेंगे ट्राई ना? स्टेट, हाई इंपीडेंस। तो फिर 0 ही बोलेंगे ना क्योंकि कुछ नहीं आ रहा फिर। नहीं, हाई इंपीडेंस को 0 नहीं नहीं बोलेंगे। हाई इंपीडेंस का मीनिंग है इट इज नॉट कनेक्टेड। जब कहीं पर ओपन सर्किट है तो उसमें से करंट फ्लो होता है, नो सर। तो वो ना तो 0 है ना तो 1 है। देखो इसका लॉजिक ये भी समझो, एक सर्किट का जो आउटपुट है वो दूसरे सर्किट के इनपुट के साथ जब कनेक्ट होता है, अंदर तो ट्रांजिस्टर ये समझ लो, तो यहां पर जो भी वोल्टेज होगा इस पॉइंट के ऊपर, लेट अस से पॉइंट x1, और यहां पर जो नोड है उसको हम बोलेंगे x2। यदि वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, इफ x2 इज हायर देन x1, तो ये करंट x2 से x1 की तरफ फ्लो होगा, और यदि x2 इज हायर देन x1 तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये कब होगा? जब वोल्टेज आएगा तब। यहां पर आउटपुट में यदि वोल्टेज लॉजिक 1 आया और यहां पर लोअर लॉजिक है तो ये करंट ट्रांसफर ऐसे आएगा जो मैंने एरो दिखाया उसके। यस सर। लेकिन यदि हमें करंट ट्रांसफर करना ही नहीं है तो क्या करेंगे? यहां पर हाई इंपीडेंस स्टेट ला देंगे। तो जब ये हाई इंपीडेंस स्टेट आएगा तो क्या होगा? या सर तो एक भी वहां पर वोल्टेज ना तो 5 वोल्ट है ना तो 0 है, ये करंट फ्लो होगा ही नहीं। क्लियर? यस सर। So it looks like it is not connected to anything. तो ये सिर्फ बफर के लिए नहीं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसके साथ में ट्राई स्टेट का लॉजिक रहता है। रिमेंबर, एक एनेबल पिन रहेगा, इफ एनेबल इज गिवन देन आउटपुट इज एज पर द लॉजिक। आउटपुट है वो इनपुट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन जो भी वो पर्टिकुलर ब्लॉक होगा उसका फंक्शन होगा उसके हिसाब से। लेकिन यदि एनेबल नहीं दिया है तो आउटपुट है वो हाई इंपीडेंस स्टेट है, वो ना तो 0 है ना तो 1 है, जिसकी वजह से वो आउटपुट आगे वाली सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जब हमें कनेक्शन करना हो तब एनेबल दे दो, जब हमें कनेक्शन नहीं करना तो एनेबल सिग्नल नहीं देना है। ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स में ऐसा ट्राई स्टेट का यूज करके हम अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग टाइम के ऊपर एनेबल कर सकते हैं। Okay, now is we started our lecture at 1, right? The time is almost 2. We can end this session, and in the next lecture we will discuss from this slide number 56, that is from the basic memory element. Sir, I have a question, sir. Yes Brajesh, please.
सर जैसे कि सर बजरंग बोला था कि अगर जैसे कि एनेबल अगर हाई है यानी सर एक्टिव लो है तो सर एनेबल 0 होगा और उसमें सर नॉन ऑपरेशनल जो होगा वो सर ऑल आउटपुट जो होगा उसका 0 होगा सर। लेकिन सर जब एनेबल अगर एक्टिव अगर हाई होगा और एनेबल अगर हाई होगा तो सर ऑपरेशनल होगा या नहीं होगा? होगा होगा। यदि एनेबल है, राइट, तो इनपुट में जो भी ये यहाँ पर क्या है, बफर है। बफर का लॉजिक मैंने क्या दिखाया, आउटपुट इज सेम एज इनपुट। यदि एनेबल दिया है और इनपुट में लॉजिक 0 आ रहा है तो आउटपुट में लॉजिक 0 जाएगा, इनपुट में लॉजिक 1 आ रहा है तो आउटपुट में लॉजिक 1 जाएगा। जो भी, क्योंकि ये लॉजिक बफर का है। उसकी जगह पर यदि हमारे पास ट्राई स्टेट एंड गेट होता तो उसमें क्या आया था, जब एनेबल सिग्नल आएगा तो वहां पर 2 इनपुट आते हैं और फिर वो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसके हिसाब से वो काम करता है। ओके सर। सर इसका इसका मतलब हुआ कि सर एनेबल इनपुट है वही सर डिसाइड करेगा ऑपरेशनल नन है नन होगा या होगा, ऑपरेशनल होगा या नहीं होगा? यस, एनेबल इनपुट है वो डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्टिव करना है या नहीं करना है। यस सर, यस। ओके सर, क्लियर। Good. Any other students? Feel free to ask if you have any doubts. Okay. Then I request you to write your attendance in the chat box. And then you can leave the meeting. Okay. Have a good day.